coming in politically speaking. There's been a lot of buzz over Champai Soren joining the Bharatiya Janata Party. In all likelihood, he may just join the BJP. But this Champai is what we're learning. So Champai Soren in the national capital. He's also given a quick reaction though. He says, my daughter lives here, so I'm here to meet her, and that I do frequently the capital. Not a word on whether or not he does plan to jump ship to the Bharatiya Janata Party. Let's quickly first up listen in. अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी तमाम जो बातें चल रही हैं इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। जी आपके भाजपा में शामिल शुभेंदु अधिकारी जी से भी आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, बात अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी हाँ, तो अभी आप झारखंड अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी जी है ना? और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? ये तो मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता है आप, आदिवासी, आपको हटाया गया। क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था? चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था। जी सर, आप लोग जैसे हमको सवाल कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। अभी मुलाकात है है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे? है भाई, हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। All right, that's the reaction us with more details. Arun, what do we make of the ongoing situation? He's in the national capital. He says his daughter lives here. He's here for personal reasons. So far, he's not interacted with any BJP leader. What are sources in the BJP telling you? Well, is very clear, Christine, which we are seeing in last couple of days, that Champai Soren has not been able to clarify this, whether he is going to stay in JMM. Whenever media asks him about his next move, he gives some goal kind of he's showing it. Of course, we all know that he's a former Chief Minister of Jharkhand. He was on that post for 6 months when Hemant Soren was sent to jail. He was the one who was given the responsibility. He was the one who Hemant Soren at that point in time. But that was happening between Hemant Soren, who was in jail at that time, and the Chief Minister. And then when Hemant Soren came out in the month of July, he was asked to take a step back, and in fact all his posters were removed from. And so there was sort of issues between both of them which were brewing. Now we're given to understand that Champai Soren, who has come to Delhi, he will be staying that at least
for 3 days he'll be in Delhi, and he, as he said, he will be meeting his daughter, and we are also told that he will have some health checkup also here in Delhi. But the fact here is that, of course, in 2-3 days, in the next 2-3 days, he will, of course, be in touch with some of the top BJP leaders, and if things go as per his demands and his wishes, then perhaps we will see a likelihood joining of Champai Soren in BJP in Delhi, along So all with eyes some really of on whether the- or not the next 2-3 days see any national on that perhaps is going to give us a clearer picture of what lies ahead for Champai Soren and the 5 to 6 other JMM MLAs reportedly standing with him in this decision. Many thanks, Arun, for breaking down all those details. For the moment, let's quickly cut across live to Home Minister Amit Shah speaking live as he distributes citizenship certificates in Ahmedabad.